Hi guys, can you see me? Okay, I think I just went live. So let me know if you can see me and you can hear me clearly. आप मुझे सुन सकते हो ना क्लियरली? ओके, थैंक यू एसएसजी गेम्स। और कैसे आप लोग? आई सपोज कि सब हम मतलब मेरे जैसे सब लोग ऑप्शंस देख ही रहे थे। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड या बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। एंड आई गेस इट वेंट ऑन टिल मुझे अभी भी पता चला कि द ऑक्शंस जस्ट आज आज के लिए ऑक्शंस खत्म हो गए। इनफैक्ट मैंने लास्ट 5-10 बिट्स मिस कर दिया। तो यू नो लेट मी नो अगर मैं कुछ मिस आउट करूँ तो। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक लोग कह रहे हैं कि आई एम ऑडिबल क्लियर इनफ एंड मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है। ओके एंड yeah, just give me 1 minute here. I'm just setting up. I'm seeing how the live stream looks on my mobile phone here. So I think ठीक ठाक ही आ रहा है. It's looking fine. Okay, it's looking fine. ठीक है. तो नमस्कार दोस्तों. Welcome to the first ever live stream in my channel. So please आपकी support की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है. You know, if things go every because this is मैं जैसे कि आप जानते हैं मैं दूसरे channels पे जा चुका हूँ. You know, I have collabed with other channels, and appeared on their channels as a guest. लेकिन this is the first time I am hosting a live session on my YouTube channel. और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं हिंदी में ही वार्तालाप करूँ. So okay, तो and today and in this live session today we got one special guest. Okay, he is my, अगर आप क्रिकेट थोड़ा भी फॉलो करते हैं like 30% 40% भी फॉलो करते हैं then you have to follow this guy on Instagram. In fact also on YouTube. He also started his YouTube channel. Okay, his name is Debjit Lahiri. And see, it's not just कि उनको क्रिकेट का नॉलेज है. I mean, आज अगर एक क्रिकेट मैच होता है उसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी या फिर अपना ओपिनियन देगा, ऐसा नहीं है. He will tell you things about cricket matches that happened 20 years ago, 30 years ago, probably when you are not even born. So that's why it's very apt that he calls himself a cricket storyteller. So guys, please स्वागत कीजिए देवजीत लहरी का. Thank you, Sanat. Hey Devjit, hi, how are you? Hi, I'm good. How are you? Yeah, doing good man. Frankly speaking, मैं होस्ट हूँ लेकिन शायद आपसे ज्यादा नर्वस मैं हूँ बिकॉज ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है होस्ट करने का. एंड दोस्तों आई नो मैं इनके बारे में बात कर रहा था. इनका जो अभी ये है जैसे कि आप इनके नाम में देख सकते हैं फॉरगॉटन क्रिकेट मेमोरीज, ये इनका टैग है इंस्टाग्राम पे. सो प्लीज डू फॉलो हिम इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग हिम, बिकॉज आई फील दैट अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो 90% of you might be already following him. So do following him on Instagram and also his YouTube channel which he started just yesterday, just 2 days ago, I guess. Okay, right. So yeah, Devjit, how are you? And I mean, I'm sure that आपने ऑप्शंस फॉलो किए रहेगा. Okay, and हम काफी इस पे बात करने वाले हैं अभी. But how's the? I mean, what is your if I ask you to give your summarized view एक सेंटेंस में, आपके क्या व्यूज है इस पे? आज का मतलब ऑप्शन तो लाइक काफी इवेंटफुल डे रहा, बहुत कुछ हुआ. एंड ये डिमांड सप्लाई का इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि यू कैन नॉट गेस कि कौन सा प्लेयर कितने प्राइस पे जाएगा. सो इट वाज वेरी अमेजिंग. बट ऑक्शन से एक बात तो हमेशा याद आता है कि मतलब जब आईपीएल फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, the way the first auction took place, that really set the tone for IPL. मतलब उसके बाद जो ये एक बड़ा इवेंट बना, तो ये ऑक्शन हमेशा एक स्पेशल प्लेस मतलब रखता है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक वन ऑफ अ काइंड इंसिडेंट मतलब इवेंट था, नॉट ओनली इन क्रिकेट बट इन एंटायर स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, बिकॉज ये ऑक्शन काइंड ऑफ ये कहीं पे भी नहीं हुआ है. तो इसी तरह आज का भी इसलिए इवेंट मैं काफी एक्साइटेड था. एंड ये 590 players, right? मतलब this was something unprecedented. 590 players को going under the hammer. So this is something new. और मैं दोस्तों मैं देख सकता हूँ कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज अ फैक्ट स्ट्रीम. नहीं, फेक स्ट्रीम नहीं है, दिस इज अ लाइव स्ट्रीम गाइस. आई एम एक्चुअली टॉकिंग विद देवजीत हियर. ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, दिस इज अ रियल वीडियो फॉर अ चेंज. ओके, योर वॉइस इज वेरी स्लो, से शिवन.
आई डोंट नो उसका क्या मतलब है. अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या देवजीत की वॉइस अगर क्लियर नहीं है, then let us know. As far as I can see here, for now we both are audible enough and clear enough. I mean, the vision good enough for this stream. Okay. And देवजीत, जैसे कि आपने कहा, it was an eventful auction. So I remember हम दोनों auctions देख रहे थे अपने अपने घर पे, and the shocking incident happened where the auctioneer collapsed, and it was actually very sad and unfortunate कि उस इंसिडेंट के ऊपर which was an unfortunate incident, इसके ऊपर भी मीम्स बनने लगे, एंड पीपल्स वर मेकिंग देयर ओन कंक्लूजन. अरे क्या अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, व्हाट हैपेंड. सो आई थिंक इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. जबकि द बीसीसीआई क्लियरली, आई मीन आफ्टर सम टाइम, they made it very clear in this tweet that hypertension during the IPL auction this afternoon, right? Yeah. So let's all hope that he gets well soon. I mean, yes, I mean he's already better than what it was in the afternoon. But let's hope he recovers soon. But I think yesterday or also Charu Sharma will continue, right? I think so. And yeah, मतलब ये जब इंसिडेंट हुआ इतना स्कैरी था, बिकॉज रिसेंटली हम लोग it स्पोर्ट्स was में very scary. एंड स्पोर्ट्स में हम लोग काफी ये सब अभी देख रहे हैं, बिकॉज आपको अगर याद होगा, आप अगर फुटबॉल फॉलो करते हैं तो यूरोस में क्रिस्टियन एरिक्सन का ऐसे हुआ था, तो काफी मतलब स्कैरी था. बट होप थैंकफुली थिंग्स आर फाइन एंड वी वर एबल टू कंटिन्यू. तो ये काफी So Devi, let's start talking about the auction. I mean the thing जिसके लिए हमने ये auction किया है, live गए हम. Okay. I think the auction started with marquee players as expected, and it was quite an eventful one. There were some expected deals, but there were some shockers also. And I think the most expected one, which turned out exactly according to the script, was Shreyas Iyer की bidding. Everyone went on, and मतलब जो अमाउंट फाइनली पे सेटल हो गया, मैं उसी अमाउंट पे मैं सोच रहा कि इनकी शायद सेटलमेंट हो जाएगी जिस टीम के लिए, आई मीन जिस टीम में जाते हैं. डेफिनेटली ही इज द पोटेंशियल कैप्टन, राइट? that was the reason why people were bidding for him. What are your views on this? क्योंकि काफी टीमों का मतलब कैप्टन जरूरत था, एंड क्योंकि ये हो सकता है कि ये लास्ट मेगा ऑक्शन है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ वेरी यंग कैप्टन. तो इसलिए श्रेयस अय्यर परफेक्टली उस बिल में फिट करता है. एंड ऑल्सो ही इज अ वेरी स्टेबल नंबर 4 बैट्समैन, जो कि नंबर 4 भी एक T20 में काफी इंपॉर्टेंट स्लॉट है एज अ प्योरली एज अ प्लेयर. सो कैप्टन एंड प्लेयर दोनों, ये इसका मतलब श्रेयस अय्यर का काफी वैल्यू था. तो KKR वेंट फॉर हिम. आई थिंक उसके पहले भी देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स दैट कि KKR इज सेविंग अप फॉर श्रेयस अय्यर टू गो ऑल आउट फॉर श्रेयस अय्यर, एंड वही हुआ. एंड yeah, I think it was a reasonable deal. And I think मेरे को इसमें सबसे funny, like you can call it unintentionally funny, was Ravichandran Ashwin, because you know, if you remember that monkeying incident, Rajasthan Royals trolled him so much on Twitter. Not just the Twitter handle, even the followers of Rajasthan Royals cricket team. और आज मतलब imagine Butler and Ashwin playing together now. I mean, that was kind of something, and I did not expect that. I definitely did not expect that Ashwin will get into Rajasthan Royals. right. मतलब ये काफी अनएक्सपेक्टेड था. और आई थिंक ना, ऑल्दो ही डिडंट मतलब उतना ज्यादा प्राइस कंपैरिजन में नहीं, मतलब 5 करोड़ IPL के स्टैंडर्ड्स में इट्स ऑल राइट. बट हैविंग सेड दैट, इसके पीछे कितना क्रिकेटिंग लॉजिक मेरे को थोड़ा सा डाइसी लगा, बिकॉज ऑल्दो ही इज अ लीडरशिप मटेरियल, बट इन T20s अश्विन एज अ बॉलर अभी थोड़ा सा डिक्लाइन कर चुके हैं. क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में देखे तो ही वाज नॉट टेकिंग एनी विकेट्स. मतलब सेकंड हाफ में ही मेड अ गुड कमबैक, बट फर्स्ट हाफ में इट वाज नॉट टू गुड. फिर एज अ बैट्समैन आल्सो ही डज नॉट एड मच वैल्यू लोअर डाउन द ऑर्डर एज अ लाइक अ फुल फ्लेजेड T20 बैट्समैन. तो वो तो है, पर इट्स अ गुड थिंग. एंड मैंने सोशल मीडिया में देखा राजस्थान रॉयल्स के हैंडल्स भी काफी they were taking the joke on themselves, और उन्होंने ऐसे उसका फुटबॉलिंग इक्विवेलेंट एक फोटो दिया बिटवीन सर्जियो रामोस एंड मेसी प्लेइंग टुगेदर, बिकॉज पहले ये लोग एनिमीज थे और अभी एक साथ खेलते हैं PSG में. तो ऐसा ही उन्होंने शेयर किया राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल हैंडल में. तो इट वाज नाइस हाउ दे took the joke. And I agree with you regarding, I mean, उनकी जो T20 फॉर्म चल रही है आजकल, but I think the only part where he can come is handy is
डिस्पाइट ही नॉट टेकिंग विकेट्स, एक चीज अश्विन के साथ रहा है कि लेकिन मोस्ट ऑफ द T20 मैचेस दैट ही प्लेस इज economical. Like Right. I would say by average he's economical. Sometimes he has bad days, but yeah, he is an economical bowler. So sometimes wo that can come in handy Right. yeah, in the subsequent matches that Rajasthan Royal plays. But yeah, it was. I mean, इस पर काफी memes भी बने. I think once Ashwin was wrapped in by Rajasthan Royals. Butler और अश्विन के memes बन रहे थे काफी. अभी भी if you check on, there are a lot of memes on that. And what do you think about Mohammad Shami? Mohammad Shami 6.25 crores, fair deal for Gujarat. I mean, fair deal given. Gujarat Titans. हाँ, fair deal given the reputation, but again मोहम्मद शामी मेरे को थोड़ा अनकन्विंसिंग लगता है in the T20 format. He's an excellent bowler, but I think उसका इकोनॉमी रेट इज वेरी हाई इन T20. मतलब तो वो एक इशू है. पर गिवन जितना मतलब मार्केट में जितना इंडियन फास्ट बॉलर्स की थोड़ा सा तो लाइक डिमांड काफी ज्यादा है, तो उतना सप्लाई नहीं है. तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो शामी एट 6.25 करोड़ इज अ very reasonable deal. Right. Or let's talk about the most steal. I would say the steal deal. David Warner for 6 crores. Honestly, मुझे लगा था this is going to blow up. मतलब डेविड वार्नर का ऑक्शन जब चल रहा था, मुझे लगा था आसानी से मिनिमम 10 करोड़ तक तो जाएगा ही ये. Okay, but I was actually very surprised. In fact, I think even Delhi Capitals did not expect this. So this was a very like positive for them, because उनके पर्स में extra money बच गया. That is like a bonus amount. That 4-5 crores extra जो बच गया, that's a bonus amount which they can utilize for good players. हाँ, आई थिंक सेम हियर. मतलब मैं भी डेविड वार्नर का काफी एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली इतना अच्छा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इनका बिड काफी ऊपर तक जाएगा. पर मे बी आई थिंक उनका जो ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज हुए हैं, तो मे बी वो फ्रेंचाइज को थोड़ा सा एप्रीहेंशन क्रिएट किया उसके वजह से कि whether we should go for him. अब पता नहीं, हम लोग को पता नहीं आउटसाइड सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उनका एग्जैक्टली क्या टसल हुआ था जिसके वजह से इतना कुछ हुआ. मे बी फ्रेंचाइज को कुछ अलग, उन लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं गया. पर 6.25 फॉर डेविड वार्नर तो मतलब एब्सोल्यूट स्टील है. मतलब और काफी सारे टीम्स को अभी भी ओपनर्स जरूरत है, एंड इनको इतना कम में लोग छोड़ दिए, तो दैट इज थोड़ा सरप्राइजिंग ऐसे. And also they now have like two potential captains, right? Delhi Capitals in the Rishabh Pant and David Warner. So definitely it's a good move for them. And I think again Trent Bolt went to Rajasthan Royals. Okay, I think Trent Bolt has been that kind of a bowler. Personally मैंने जो मुंबई इंडियंस को खेलते हुए देखा है, like whenever he plays हमें ऐसा लगता है कि he's out of form, उनका टाइम हो गया, but more often than not उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए has always delivered. So now he's playing for Rajasthan Royals. So I think it's going to be a good team combination के बारे में बाद में बात करते हैं, but I think they got a good deal there. Probably he's overpriced or not. I mean, it's slightly definitely questionable, and but yeah, I mean they have got they what is your opinion about this? Opinion about Trent Bolt? हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड बाय, बिकॉज उनका फॉर्म अभी अच्छा ही चल रहा था ओवर द एक्चुअली इनिशियल ईयर्स में. जब हम ट्रेंट बोल्ट, आई थिंक व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ द केकेआर लाइनअप, आई थिंक 3-4 इयर्स बैक, उस टाइम उनका फॉर्म काफी एक्सपेंसिव जाते थे. बट ये भी एक ऐसे प्लेयर है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो इन्होंने भी आईपीएल और T20 फॉर्मेट में अडेप्ट किया है, जिसका रिजल्ट हमें मुंबई इंडियंस में मिला. एंड 8 करोड़ फॉर ट्रेंट बोल्ट, एक एक्सपीरियंस लाएंगे वो आरआर बॉलिंग लाइनअप में. एक मतलब बॉलिंग लीडर जिसे बोलते हैं, वैसा एक रोल प्ले कर सकते हैं. तो 8 करोड़ में तो आई थिंक इट्स अ गुड डील. Yeah, I think many people are, मैं यहाँ पे चैट में देख रहा हूँ, they are talking about शकीब उल हसन and वृद्धिमान साहा, सुरेश रैना being unsold. तो guys, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि I think it will be too early to say anything right now. ये चीज हमने प्रीवियस ऑक्शंस में भी देखा है, that जो पहला राउंड रहता है, जो मेन राउंड रहता है, प्लेयर्स को ये प्लेयर्स के लिए बिड नहीं करते, because that is also one strategy. So by the time these names come up in the second round once again, most of the teams would have burned their purses. पैसे खत्म हुए रहेंगे, and these players will be available for much cheaper than what they might have planned for. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि in second round both सुरेश रैना and शकीब उल हसन will be sold.
and डेफिनेटली। even Ridhman sir. That's what I feel. So I हाँ। think जो भी ये comment कर रहे हैं, I think it's too early to say anything. और ट्रेंट बोल्ट का मैं एक और मेंशन करना चाहता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने काफी यंग डेज से फॉलो किया है बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ द केकेआर सेटअप और मैं कोलकाता नाइट हाँ, राइडर्स का काफी डाई हार्ड फैन हूँ। okay, ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अंडर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर लाइक ट्रेंट बोल्ट प्रसिद्ध कृष्णा भी आई थिंक फ्लरिश कर सकते हैं इन दिस राजस्थान रॉयल्स सेटअप क्योंकि एक गाइडेंस मिलता है फास्ट बॉलर का मतलब एक सीनियर जो मेरे को लगता है केकेआर में वैसा एनवायरनमेंट उतना नहीं था काफी यंग बॉलर्स थे केकेआर में बट देयर वाज नॉट मतलब पैट कमिंस वाज देयर फॉर सम टाइम बट ऐसा कोई लाइक सीनियर स्टॉलवर्ट फिगर नहीं था केकेआर बॉलिंग लाइनअप में इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कि अभी यहाँ पे उनको मिलेगा। okay, great. So I think we'll move on to the, I mean, just next set of players, individual players. Okay, so this one, क्या बोलूं मतलब मेरे मेरे पास कोई I mean I don't have any words to okay ठीक है कुछ maybe Rajasthan Royal fans might disagree with me on this okay but 8.5 crores for Hetmeyer in fact मेरे को याद है मैं जब देख रहा था उसी टाइम पे हर्षा बोगले ने भी ये चीज ट्वीट किया that he himself will be laughing over this till morning हाँ for the amount for the kind of amount that he has been brought into this what's your say on this Debjit? हाँ मतलब शिमरन हेटमायर अभी तो दो तीन सीजन आई थिंक आईपीएल में खेल चुके हैं हाँ पर हम इतना एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कभी फुलफिल नहीं किए वैसा और तो वही है कि मतलब इतना ज्यादा पैसा इनके ऊपर इन्वेस्ट करना कहीं कहीं ना कहीं तो यहाँ पे थोड़ा मतलब क्रिकेटिंग रीजंस का मतलब लॉजिक का थोड़ा सा लैक लैक लगता है मतलब इस एरिया में मतलब स्पेशली मतलब शिमरन हेटमायर ने ऐसे कुछ सब्सटैंशियल किया नहीं है जिसके वजह से आप इतना उनको पैसा दे रहे हो पर हु नोस वेस्ट इंडियन टैलेंट्स हमेशा थोड़ा सा तो अनप्रेडिक्टेबल होते ही है मे बी ऑन right दैट डे दे कुड I agree टर्न with you. ऑन इट्स हेड सो यही है इसी पे लोग गैम्बल करते हैं एंड इतना शॉर्ट And फॉर्मेट में तो कुछ भी हो सकता है। yeah, and the thing with the Rajasthan Royals, because they got almost four openers here. They got Jaiswal, they got Padikal, then they got Sanju Samson, and they have also got Butler, right? Hitler, So I think Hitmaier will. I mean, he's going to play three down or four down. हाँ हाँ And I वो also saw, the video posted by Rajasthan Royals owner. So I think Butler will be playing at number 3 or number 4 position. I think he said something like that. Okay, because obviously now Jaiswal is a natural opener. I mean, he has to open if he राइट plays. अभी देवदत्त के साथ वो लोग कैसे ये करेंगे आई डोंट नो ही दे विल प्ले हिम एज अ ओपनर और सैमसन आई थिंक सैमसन विल प्ले वन डाउन ऐसा हाँ मुझे लगता है एंड Jaiswal and Padikal will open the innings for Rajasthan Royals right हाँ पदिकल आई फील उनको तो ओपन करना ही चाहिए बिकॉज हाँ उनके ओपन करना ही चाहिए एग्जैक्टली हाँ क्योंकि उनका भी आई थिंक आफ्टर पावर प्ले थोड़ा एक्सेलरेट करना उनका थोड़ा एक इशू हो जाता है जो आरसीबी में भी था ही यूज्ड टू स्टार्ट ऑफ वेल पर बीच इनिंग्स में थोड़ा सा इशू होता है टू एक्सेलरेट तो उनको तो आप मिडिल ऑर्डर में आई थिंक खिला नहीं सकते तो जायसवाल और पादिकल तो ओपन करेंगे ही एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। या बट आई मीन मतलब when his name came Hetmer, honestly speaking, I felt like there are even slight chances that he might even go unsold हाँ हाँ because I barely remember one or two innings of him in last two editions where he made it count. हम्म And I can even understand अगर इनको जो नए टीम का सेटअप है उसमें इंक्लूड किया होता then I can still understand. But obviously Rajasthan Royals has some plans on cards and only they can explain this better. हम्म Okay, and it, okay, I think Start करेंगे। the screen's blank, right? Or you can Right. see? Yeah, no, it's blank. Okay. Just a second. Chahal Okay. 6 I So think yeah, tell me, Devjit, you start with this. काफी अच्छा डील है क्योंकि Exactly. और अश्विन के साथ इनका एक और एक्सपीरियंस्ड स्पिनर है लाइनअप में चाहल एक अच्छा कॉम्बो है एंड चाहल ने ही मेड अ गुड कमबैक अभी इंटरनेशनल कुछ रीसेंट इंटरनेशनल मैचेस में भी जो उन बीच में लग रहा था मे बी थोड़ा सा फॉर्म लूज कर गए हैं पर that he has overcome and he's a class act मतलब उनको he Yeah. knows बैट्समैन he gets after you उनको पता होता है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे बॉल डाले टू
bamboozle them. So Chahal is definitely a very good buy, and I think उनका Yeah, it's a और good buy. It's a good buy. It's like it's not even that उनको कम मिला, but बहुत ज़्यादा भी नहीं मिला. It's somewhere there in the middle. I And was sorry, yeah, हाँ, I was surprised कि मुंबई इनके लिए ऑल आउट नहीं गए because हाँ they did हाँ, not have any spinners at the time जब इनका yeah, बिटिंग चल रहा था. yeah. And Mumbai Indians, अगर आप history देखोगे, has a, I mean, it has a history of not producing great spinners. Yes, Rahul Chahar has been doing good for a while, but traditionally always been Bumrah, Trent Bolt, Malinga, the bowlers who have been the core of their bowling attack. Right? And जैसे कि आपने कहा, it will be very interesting to have Chahal and Ashwin in the same team. And I think the Riyan Parag भी है इसी Riyan Parag, let me yes, Riyan Parag is also there in this team. So he's an unorthodox spinner. So I think it's going to be it is a they have got 3 spinners in the attack now. But and do you think the venue will matter? Because हम सब देख कि this IPL will be played at a single venue. All matches will be played in Mumbai. So do you think that जो management ने जो अलग-अलग strategies बनाकर आए थे auction में, the venue would have influenced their decisions to go for the bidding? Or not much? I think so. नहीं थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस किया होगा because इवेंचुअली हम लोग का तो पुराना फॉर्मेट अवे होम फॉर्मेट में हम लोग आएंगे ही इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. एंड क्योंकि मेरे को लगता है कि आफ्टर दिस वी माइट नॉट हैव टू मेगा ऑक्शंस. तो क्लब्स दिस टीम्स विल रिटेन दिस प्लेयर्स. फिर एक कल्चर आएगा टू टू नर्चर प्लेयर्स फ्रॉम देयर इंडिविजुअल एकेडमीज. तो एक वो एक रहेगा कि द कोड विल रिमेन सेम. तो इसके लिए आई थिंक वेन्यू का तो दे डेफिनेटली हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन. Okay, and actually when Chahal के bidding ये हुआ, I mean bidding process start हुआ, I was also surprised that RCB didn't go for it. I mean initially I was surprised that RCB didn't go for him, but बाद में मुझे realize हुआ that RCB has already spent almost 18 crores on 2 players. So when Chahal शुरू हुई, they had already only left around 16 crores in their purse. Okay, and Chahal, as you can see, went for 6 crores. So that means if they took Chahal in their team, RCB would have less than 10 crores in their pocket. So I don't know, मतलब either this was pre-planned that उन्होंने सोच लिया था कि Chahal is not in this equation, right? Or there was some lapse in the management when they went for other players. हाँ डेफिनेटली. अब ऑक्शन में आप जितना भी प्लान कर लो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है. एंड इतना स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है. तो देयर इज एवरी चांस कि जो उन लोगों ने प्लान किया फिर वो नहीं ट्रांसपायर किया वैसे. Yeah, right. And okay, I mean, how can we not talk about this player, right? but to be fair to him, मतलब international. No, he's a good player. He has played very well internationally, and I know that he will attract. I mean people are going to bet for him. But 10.75 crores. See, why I say this is, if you look at it, I look this as a as a deal for 2 players. Okay, like Hasranga they got for 10.75 crores, and Hazelwood they got for around 8 crores. So RCB ने 18 करोड़ 18 crores में ही 2 players को ये bid कर लिया. That was a big move and very bold move. If it works, hats off to them, and I hope for their sake that it works out for them. Okay, but yes, it was a big gamble to have both Hazelwood and Hasranga. And आपको क्या लगता है? हाँ डेफिनेटली. एंड मेरे को तो लगता है कि अगर ये बीच में अगर ब्रेक नहीं होता मे बी वो फ्लो में इनका और थोड़ा बढ़ जाता शायद. मतलब आई एग्री विद यू. 12 तक शायद पहुंच भी सकता था. एंड बट इट्स अ बिग गैम्बल उन्होंने लिया है एंड उनके ऊपर फेथ लिया है. तो let's see how it works. Yeah, and I think now they also have Harshal Patel in the team. Harshal Patel and Mohammad Siraj को तो return किया था. And they have Hazelwood, so they are like shaping up their pace attack. I can see that, right? And I think they also have Shahbaz Ahmed. They took Shahbaz Ahmed today. Yeah, Shahbaz Ahmed went for 2.4 crores. And Glenn Maxwell तो है. Glenn Maxwell और आपका और भी I think one major by Faf du Plessis RCB का I think strength. Yeah, I think that was the best
Best buy by RCB today. Getting Duplessis for seven. I think approximate 7 crore. I think it was a वेरी good गुड, deal. वेरी गुड Yes, बाय। और एक लीडरशिप मटेरियल भी है ना, आई थिंक leadership material है कोहली and very नॉट। dependable player. हाँ, I was just going through their team. I Team. think that they're a very, I think उन्होंने सबसे मतलब काफी मतलब सेंसिबल बिजनेस भी किया है, बिकॉज आई थिंक हर डिपार्टमेंट में उन लोगों का थोड़ा थोड़ा कवर्ड है ही। विकेट हाँ कीपिंग में आप देखेंगे दिनेश कार्तिक दे हैव टेकन, मतलब हाँ, Dinesh एक्सपीरियंस। Karthik was he brings stability to middle order. हाँ It was a good buy for five crores, right? हाँ हाँ, गुड बाय Five point डेफिनेटली। five crores. Yeah. और बॉलिंग में आपका हेजलवुड सिराज आ गया, फिर ऑलराउंडर ऑप्शंस काफी सारे हैं, हसरंगा, हर्षल पटेल। So जहाँ विकेट कीपर की बात करें, आई थिंक के भरत भरत का आज ऑप्शन बिडिंग नहीं हुआ, राइट? नहीं नहीं, हुआ हुआ, हुआ है बट क्या? ओके, आई मस्ट हैव मिस्ड इट. टू विच टीम इज ही प्लेइंग? हाँ, दैट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कहाँ पे गया Okay, है। okay. So that means, I mean, anyways, I think he's not in RCB definitely नो नो, because I नॉट don't इन। see his names here. Okay. I अगर think he was a कमिटमेंट, very bright prospect for RCB last year. तो मुझे लगा था उसको retain करेंगे, but I guess some other team ही might have वाज taken him then. ही वाज द फर्स्ट गाय टू बी ब्रॉट ऑन द अनकैप्ड विकेट कीपर का जो सेट आया। Oh, okay, okay, तो okay, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर किसने उसके हाँ, दिल्ली कैपिटल्स okay. कमेंट्स। Delhi Capitals. हाँ Okay, great, great. ठीक है. Again, I think it was a very so it was good to see CSK go all out to retain their favorite players. See, not just CSK, even MI, Ishan Kishan story. We know that. I mean, how they went all out to Ishan Kishan, and frankly speaking, I was not surprised. कुछ लोग कहते कि 14 crore. I saw some posts on Twitter. I mean, it was way too, expensive, Deepak Chah. But I think CSK had their plan set कि what their bowling attack is going to look like, right? और सीएसके का, और आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा रिसेंसी बायस भी है, क्योंकि चाहर का बैटिंग परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू Right. इंटरनेशनल मैचेस काफी अच्छा हुआ है। तो Hmm. ऐसे तो हम लोग का इंडियन फास्ट बॉलर का थोड़ा सा स्केर्सिटी है, उसके ऊपर बैटिंग भी ये कर लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक, तो मतलब डेफिनेटली इनका बिड तो जाना ही था ऊपर। और सीएसके का टेंडेंसी था ही टू टू कीप देयर कोर इंटैक्ट, तो दीपक चाहर वाज वन ऑफ देयर मेन पिलर्स, तो नो सरप्राइज दे वेंट हार्ड फॉर हिम। Yeah, and they already have Ravindra Jadeja and हाँ Moin Ali. रविंद्र जडेजा और मोइन अली को तो इन्होंने सीएसके ने रिटेन किया था. हाँ हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे अंबती हैव, रायडू वापस आया इन लोग के। हाँ, अंबती रायडू भी ये है. No, I'm talking about bowling department. So far they have Tushar Deshpande, KM Asif, and Deepak Chahar. So I think they will go for one more seamer definitely. हाँ, तुषार देशपांडे, They- आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड दे वेंट फॉर हिम, ऑल्दो उनको एकदम बेस प्राइस में मिला, बट ही वाज वेरी हाँ, एक्सपेंसिव इन द प्रीवियस सीजन ही प्लेड। आई थिंक कुछ 11 के ऊपर उनका इकोनॉमी रेट था, बट आई गेस वही okay, पोटेंशियल के ऊपर दे हैव बिड, एंड क्योंकि yeah, बेस प्राइस में है तो इसलिए। और right. केएम आसिफ, आई थिंक ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ देयर सेटअप लास्ट ईयर एज वेल, एंड Yes. दे बॉट हिम अगेन फॉर बेस प्राइस। एंड मेरे इसमें मतलब इस इमेज लिस्ट में उनका फोटो तो नहीं है, बट आई थिंक डॉन ब्रावो वाज अगेन अ गुड बाय एट 4.4 crore समथिंग अप्रोक्सीमेटली, हाँ 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 बिकॉज ही मैंने देखा है कि जो उनके जो डेथ ओवर्स जो उन्होंने बॉल किया है सीएसके के लिए, आई थिंक दैट वाज नोबडी एक्सपेक्टेड दैट ही विल बॉल सो वेल दोस डेथ ओवर्स. हाँ हाँ हाँ, उनका इट्स उनका डेथ ओवर बॉलिंग तो काफी अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है काफी। ओनली मेरा इसके बारे में मतलब ओनली अप्रेंशन यही है कि क्योंकि मे बी मेगा ऑक्शन और जल्दी ना हो, तो ये हाँ, इनका एज भी काफी हो गया है, एंड ही माइट बी डिक्लाइनिंग इन 1-2 years, तो उसके बाद आप ब्रावो को किसके साथ रिप्लेस करोगे? तो आई फेल्ट दैट द टीम का फोकस थोड़ा यंग प्लेयर्स में ज्यादा होना चाहिए था, पर इन लोगों का टीम में अगर आप but देखें CSK, policy, they always go for prefer experience. That has been their mantra for past few years. राइट राइट। Excuse me. Yeah, they have preferred experience over young players. जिस बात के लिए उनको actually troll भी किया जाता था, हाँ हाँ, but then they proved everyone wrong. I mean, in last IPL, right? राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। Again, I think it's a mystery for मिस्ट्री है। me. Yeah, I mean, uh, can you see? Okay, I यस, think there's a. हाँ You अभी can आ see, right? Okay, राइट। sorry. Yeah. So this player, I think, just like, I mean, he and Hetmeyer
almost in the same league, slightly better than Hetmeyer, I would say still, हाँ in terms of being an impact player. But then जितना इनकी पोटेंशियल है, इनका मतलब पोटेंशियल पे रह गया. मुझे हाँ अभी भी याद है, लाइक एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम आउट टू बैट फॉर पंजाब, the commentator used to say he is a big hitter, he can हाँ hit it out of the park, लेकिन but very rarely we got to see that. yes. Hopefully he'll have a change of fortunes with SRH, right? He But were you surprised with the amount they went for this player? वेरी वेरी सरप्राइज, और मेरे को तो उससे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि केकेआर क्यों इतना बिट कर रहा था टिल लाइक उनके पास तो पैसे ही नहीं Right, थे उस टाइम. एंड right, अंडरस्टैंड दे नीडेड अ विकेट कीपर, बट मतलब एट दैट स्टेज, मतलब जब आई थिंक दे वेंट अप टिल 10:25 और समथिंग, 10:25 या 10:50 तक दे वेंट, तो right. वाज रियली सरप्राइजिंग. एंड अगेन पूरन काफी चांसेस उनको मिले हैं, पर अभी तक उनका पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाया वो. पर वही है कि वेस्ट इंडियन प्लेयर, क्योंकि दे हैव दिस एबिलिटी टू टर्न द गेम सडनली ऑन देयर हेड, मतलब ऑन देयर डे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं. Yeah, तो आई गेस वैसा उसके लिए गैम्बल लिया है, और एसआरएच के पास बजट भी आई थिंक काफी है, तो आई थिंक इन दैट I वे. think their best buy, uh, the best deal they got in today's auction was Rahul Tripathi. हाँ हाँ. So I think Rahul Tripathi. Let me check. Okay, he went for बहुत सही. 8.5 crores, but yeah, I think it was a very good deal for them, because if you look at their batting lineup, I can see Kane Williamson, Rahul Tripathi, Priyam Garg, and Nicholas Puran. Like, of हाँ course, I mean all these are good players individually, but on paper it does not look that promising to me. हाँ It's नहीं. definitely is a worrying sum, but हाँ अभी भी time है. I mean tomorrow. I mean हाँ. राहुल राहुल त्रिपाठी आई थिंक, मतलब मेरे काफी दोस्त जो लोग केकेआर सपोर्ट करते हैं, वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे कि त्रिपाठी निकल गए, बिकॉज इज अ वेरी गुड गाय टू हैव इन द सेटअप, yeah. वेरी हार्ड वर्किंग, एंड ही परफॉर्म्स मोर और लेस कंसिस्टेंटली. मतलब आप उसको ओपनर खिला दो, नंबर 3 खिला दो, कभी कभी 6 में भी आपको अगर उसको चांस दो तो he'll do something or the other. तो Hmm. Actually, I missed Tripathi's bidding. I mean, while watching live, the मतलब KKR ने उसके लिए हाँ bidding के लिए कोशिश की थी, हाँ, उसको ये करने की. इनिशियल फ्यू बिड्स में दे वर इन द फ्रे, बट उसके बाद तो इट वेंट आउट ऑफ देयर बजट, तो फिर. Okay, okay, okay. His change of fortunes, हम्म. and the biggest. I mean, it's not even this. Again, this was not surprising. हाँ हाँ I remember for first आज के जो पहले 10-15 ऑप्शंस थे, मुंबई इंडियंस डिड नॉट. They hardly. I think they just went for 2 or 3 players. Otherwise, they did not bid for anyone. They were हाँ very clear कि किसके लिए जाना है. हाँ And like you said, मैं 100% sure था कि ईशान किशन will be backed by Mumbai Indians. हाँ. But and I was also very almost sure that they'll also back Chahal. That which I हम्म. was surprised. Like you said, they did not go all out for him. हाँ But then again, budget management and all. हाँ. But do you think like it's Ishan Kishan for 15 crores? It's a result of, I won't say like I don't remember what price he was there for last. हम्म. I mean the previous 3 editions, हाँ हाँ. but I think it has just shot up. It was definitely nowhere near this figure. हाँ uh, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड तो था कि इनका ज्यादा जाएगा, बिकॉज आफ्टर आई थिंक श्रेयस अय्यर, ईशान किशन का ही सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड hmm, बिट था, मतलब. तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ज्यादा जाएगा, पर ईशान किशन वेरी टैलेंटेड इंडियन यंग यंग प्लेयर, काफी yeah. टैलेंटेड है, विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है, मतलब अगर आप चाहो तो. And I think Mumbai Indians always, matlab, they'll also looked in long term sense. Ki, if probably 2-3 years from now, he's also probably the future potential captain. हाँ. If if he's able to maintain his place in the team, so हम्म. he has that potential. And मुझे याद है last IPL में he started off well with a couple of good innings in the first half, but then there was a slew of हाँ. poor scores, and he was actually even dropped from the playing 11 for some हम्म. matches. और फिर last कुछ matches में he suddenly came back to form, especially the last match. Baba, he totally, that innings was just mind blowing. I still हाँ remember that innings. हाँ हाँ. MI had a mathematically impossible chance of making it to the final, the super. I mean the next stage, but like at least he gave a glimmer of hope, even though it was not practically possible. राइट राइट. Yeah. कृणाल. So
ये ये इसका मैं इसको just for discussion sake I brought this because I thought I was very curious to see if Gujarat goes for him हाँ हाँ and हाँ if Gujarat backs him, then once again you will get to see Pandya brothers playing in the same team. हाँ But again, पता नहीं यार, मैं तो I was not convinced with the amount with they went for, and and to be honest, he is more of like in जो संजय मांजरेकर का जो famous term है, bits and pieces. bits and pieces players. He is actually that kind of player right now in his current form. Like बैटिंग में भी is not, उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, like when a team is like 41 for 4 या 50 for 4, उसके ऊपर इतना ये नहीं कर सकते, and bowling में very rarely he takes, हाँ I mean, हाँ he produces a match winning spell. He'll give you a wicket or two, but वो match winning spell आपको Right. I mean, बहुत rarely देगा. So उस हिसाब से 8.25 crores was little too much for him. Lucknow हाँ Super Kings, who otherwise are doing a good job in setting up their team, but I think Pandya was little too much. I mean, उनके Krunal Pandya side. but surprisingly they went for Deepak Hooda as well, जो कि Yeah. I saw that. तो उसको भी आप थोड़ा वो उसी सेगमेंट में डाल सकते हो, थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस वाला सेगमेंट में. Yeah. ही इज अ स्टिल अ बेटर बैटर, पर Yeah, he's definitely a better batter than Krunal Pandya, and उनको I think उनको 5, Deepak Huda went in for 5 crores and he went in for 8 crores. हाँ So हाँ yeah, so that will also be debated. But यहाँ पे अगर हम सेटअप देखें इनका, देख दे लखनऊ सुपर जायंट्स, they got a good deal with Manish Pandey. With right. they got him just for 4.6 crores. And इनका ओपनिंग तो सेट है with KL Rahul and Quinton de Kock. हाँ And हाँ middle order में Marcus Stoinis, Deepak Hooda, Manish Pandey, followed by Jason Holder. तो I think they are forming their team well here, considering they are playing their first IPL. So मतलब अच्छे से shape हो रहा है अभी. We have to see what eventually it will turn out to be based on tomorrow's auction. मेरे को थोड़ा सा कंसर्न है रिगार्डिंग दैट टॉप ऑर्डर का Okay. स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज. मतलब केएल राहुल भी हाँ थोड़े स्लो स्टार्ट करते हैं, आप मनीष पांडे को yeah. देखिए वो भी थोड़े स्लो स्टार्ट करते हैं. क्विंटन डिकॉक इनिशिएटिव को थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हैं, पर वो भी मतलब But I ऐसा. don't know, मुझे ऐसा लगता है कि strictly speaking in terms of a opening partner, I think Quinton de Kock will be a better opening partner than Mayank Agarwal to राइट. KL Rahul. That's what I feel. हाँ हाँ Because डेफिनेटली. both have different style of play. And मेरे को मतलब पंजाब की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी कि both Rahul and Mayank Agarwal had similar style of play. Yes, Mayank was slightly more aggressive towards the start, but I think if you consider their style of play overall throughout the tournament, they were similar kind of players, हाँ and you need that someone who can play a blinder sometimes. So I think Quinton de Kock is capable of doing that. हाँ So, and of course the traditional left hand right hand combination वो भी वो भी है. ये करेगा. See, and yeah, Jason Holder for, I mean they could Jason Holder को 8.7 crores में लेके, I think it was a good deal. It was a good deal for them. गुड डील. आई थिंक जेसन होल्डर काफी इंप्रूव किए है प्लेयर, एंड मतलब उनका अभी रिसेंट जो सीरीज रहा इंडिया के अगेंस्ट, उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था. मतलब ऑल्दो वेस्ट इंडीज एज अ टीम डिसअपॉइंटिंग थे, पर होल्डर Yeah. का इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वेरी गुड. उन्होंने फर्स्ट मैच में बैटिंग में अच्छा किया, लास्ट मैच में बॉलिंग में ही वाज वेरी गुड इन द डेथ. मतलब तो गुड प्लेयर टू हैव इन द मिडिल ऑर्डर. Yeah, and मैं just मैं live ये कर रहा था तभी I was checking the auctions. My father told me that Avish Khan had gone for 10 crores. Lucknow Super Kings. So they now have Mark Wood and Avish Khan. So it looks good for them. And there's also, I mean, Ankit Rajput again. I mean, he has been a bit inconsistent. Right. But I think Avish Khan was a good buy. And based on what he did last IPL, I knew that उसको भी नहीं है, उनके लिए ज्यादा I mean ये होगा, bidding war होगा, and it's good to see him get that much money. Because all these players जो भी इनको the amount they are getting, Ishan Kishan, even Shardul Thakur, then Deepak Chahar and Avesh Khan, it's like what you can say 500%, 600% more they are getting than what they used to get earlier. Right. So I think इसके बारे में we already talked. So it was kind of deserving, but like you said,
It's sad to see him leave. I mean, I don't know how he feels about it that he has to leave the KKR setup. So पर देन अगेन जो 10 करोड़ प्राइस टैग है दैट इज अ लिटिल ओवरवैल्यूड आई फील मतलब प्रसिद्ध okay, कृष्णा ही इज अ हाँ, गुड टैलेंटेड बॉलर आई थिंक ही विल बी अ गुड मतलब रेड बॉल प्लेयर तो काफी अच्छे बनेंगे टेस्ट में अगर जब उनको चांस मिलेगा तो वनडे में भी ही काफी अच्छे है T20 में थोड़ा सा उनका मतलब इनकंसिस्टेंट रहे हैं एंड उनका इकोनॉमी रेट भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा के तरफ है तो ये होपफुली अभी भी तेज इम्प्रूव करेंगे एंड मे बी प्रसिद्ध बेस्ट and ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा आरआर में अब दिखा जाएगा मतलब और क्या आपको लगता है कि अभी जो इंडिया वेस्ट इंडीज मैचेस हुए थे, द लास्ट स्पेशली द लास्ट टू मैचेस जो बॉलिंग स्पेसिफिक those were match winning efforts in both the राइट innings, so that might have influenced a bit. Of course they were one day matches, but हाँ मुझे तो लगता है कि definitely influence किया होगा that हाँ factor. हाँ वो रिसेंसी बायस तो थोड़ा सा आया ही होगा क्योंकि अभी हाँ अभी वो एक्चुअली मैन ऑफ द सीरीज भी बने मतलब ये 3 मैच हाँ प्रसिद्ध कृष्णा तो और उनका स्पेल काफी इकोनॉमिकल और काफी थ्रेटनिंग था तो दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर इट एंड वही एक और वो है कि इंडियन फास्ट बॉलर बहुत सारे टीम्स को जरूरत था तो उसके वजह से भी प्राइस थोड़ा हाई की तरफ गया okay, just people are telling me that my voice is breaking, so uh, can you just confirm people? अच्छा, people stop discussion and telling me his voice is breaking. किसकी वॉइस? मेरी वॉइस, राइट? वो भी पता नहीं मेरा भी हो सकता है नहीं नहीं, आई थिंक ये नहीं तो आपके फॉलोअर्स आपको बोलते थे किसकी वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई? माय वॉइस? नाउ इट्स फाइन ओके, ये से नाउ इट्स फाइन। आई डोंट नो, वो कनेक्शन का ये होते रहेगा आई गेस। सो नाउ इट्स फाइन ना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सो yeah, I think this was a surprise package, but then considering जो T20 वर्ल्ड कप में अभी इनके एक्सप्लॉइट्स चले, it was a very good buy for Mumbai Indians. एंड 3 करोड़ इन आईपीएल स्टैंडर्ड्स तो कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट मतलब एंड Yeah, समवन हु हैज डन वेल इन इंटरनेशनल स्टेज तो आई थिंक I was इट्स actually surprised कि इतना और other teams did not go for him, हाँ and I mean when परहैप्स you फिक्सचर कंजेशन का कुछ है कि नहीं मेरे को पता नहीं विद इंटरनेशनल फिक्सचर्स में भी कुछ oh, मैचेस but मिस कुछ international हाँ वो भी है, but man he got 2 centuries and 3 half centuries. I हम्म mean, he is quite something. So yeah, maybe I think I like you said, वही रीजन हो सकता है इनका जो इंटरनेशनल भी जो स्केड्यूल है आगे, हाँ because he is he will play for South Africa. राइट So, so yeah, this is just to for people to know like the rise of Harshal Patel from like this is incredible man. मतलब this from 20 lakhs to 10.75 crores, it's just incredible, you know. हाँ हाँ डेफिनेटली बट डिजर्विंगली सो लास्ट सीजन उन्होंने मतलब ही वाज द काफी कम अच्छे मार्जिन से ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर तो Yeah, a विल big टेक margin. हाँ एंड उन्होंने आई थिंक उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू भी किया वो रिसेंट होम सीरीज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड T20 में तो Hmm. वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस वाज फेयरली गुड तो आई होप ही इज नॉट अ वन सीजन वंडर जो लोग कहते हैं एंड ये जो 10.75 करोड़ का उनको अभी मिला तो ही विल जस्टिफाई दिस प्राइस टैग अभी उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा तो रहेंगे ही तो होपफुली दैट Hmm. Yeah, हाँ hopefully he'll not be that, 1 season wonder, 2 season wonder players रहते हैं ना, जो हाँ एक सीजन में आते हैं और वही they play very well. And I don't know why I don't have a good feeling about yeah, Tewatia. I mean, I hope he proves me wrong. I hope he proves me wrong. He plays well, but उनको इतना ये किया, वो जो एक इनिंग्स खेला उन्होंने, where he हाँ hit 5 sixes, right? Four फाइव sixes or five sixes. फाइव सिक्स Yeah, अगेंस्ट या yeah. उसके बाद he still played a couple of match-winning innings also, but हम्म I think now have to wait and watch and see how he, I mean, plays. I mean, how he carry forward this form. I mean, whether he's able to produce those knocks on a consistent basis. हाँ 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 हाँ, वही आई थिंक उनका लास्ट सीजन थोड़ा सा तो अंडरवेलमिंग था शायद आई थिंक उसके बाद जो 5 सिक्सेस के बाद उसका उनका एक और अच्छा इनिंग्स था आई रिमेम्बर विद रियान
आई थिंक रियान पराग ने कुछ अच्छा पार्टनरशिप किया था, बट आफ्टर दैट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ही हैज Yeah, पॉइंट टू प्रूव अभी। yeah. So, I mean, these were just a second. Yeah, I mean, these are the players that I wanted to talk about. So, हम्म apart from these, anything that you wanted to talk about आज के वन ऑक्शन में? एक One thing I wanted to ask you actually, you know, हम्म, before बाद में मैं भूल जाऊंगा, you know, it skips my mind, फिर ये हो जाता है. So, हाँ आपको क्या लगता है कि you know, when जब एक टीम when they are you know going out all out to buy their players, their old players, okay, हम्म, तो वो स्ट्रैटेजी और वो प्लानिंग जो भी है वो कभी कभी साइड में होकर इट्स मोर अबाउट हैविंग दैट यू नो गेटिंग दैट ओल्ड टीम बैक कि नहीं राइट मतलब दिस गाय हैज डन अस डन प्लेड सो वेल फॉर अस तो इसको हम लेके ही रहेंगे हाँ हाँ because I saw many of such bids happen in today's auction. जैसे हम्म कि ईशान किशन, you know, see I am a Mumbai Indians fan, I am a Mumbai Indians supporter, so but still and I love ईशान किशन, but हम्म, still मुझे लगा कि यू नो इट्स लिटिल गेटिंग ओवर द टॉप हियर कि हाँ आई मीन मुझे लगता है कि आई डोंट नो हाउ फार दे वुड हैव गॉन इफ हाँ they हाँ went on. Similarly, Deepak Char for we saw Deepak Char go for 14 crores, and then Harshal Patel का हमने देखा. So what do you feel like? Sometimes it's more about getting that you know your old players back rather than you know strategies and all that stuff, technical stuff. हाँ वो तो एक पार्ट है, क्योंकि आई थिंक आईपीएल टीम्स का अभी एक कॉन्शियस एफर्ट है टू मेंटेन एन आइडेंटिटी, जहाँ पे उन लोगों का एक कोर सेट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स रहे, एंड पीपल सॉर्ट ऑफ जो उनके फैंस है दे रिलेट टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर, जो आप ऐसे कोई भी दूसरे स्पोर्ट्स के लीग्स में जैसे होता है, मतलब हाँ. देयर इज अ कोर सेट, एक टीम का आइडेंटिटी होता है। तो एक तो आईपीएल टीम्स का फ्रेंचाइजीज का भी वो अभी एफर्ट है थोड़ा सा कि सिमिलर प्लेयर्स रिटेन करे, तो ये काफी सीएसके के साथ हुआ, इवन केकेआर में भी काफी पुराने प्लेयर्स वापस आए, तो Hmm. ये एक टेंडेंसी है। पर हाँ. एंड देन अगेन ईशान किशन, दीपक चहर, ये लोग लाइक इंडियन इंडियन प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है करंट, तो इन लोगों के स्टॉक्स तो हाई है ही। हाँ, थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया, पर Hmm. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दिस वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि इतना जाएगा मे बी, बिकॉज Hmm. And I asked that question purely as a MI fan, no, because मुझे ऐसा लगा कि you know MI has that tendency to कि that जो उनका जो core team रहेगा उसको हम ये change नहीं करेंगे. Something that CSK also followed for a very long time, and the only reason why I see they have retained Kyron Pollard हाँ because Pollard hardly made any significant contribution in last IPL, बट उसको मतलब ये करना तो छोड़, बिड करना तो छोड़, उसको रिटेन ही किया सीधा. सो दे आल्सो सी व्हेन रोहित शर्मा वाज नॉट प्लेइंग पोलार्ड वाज द कैप्टन, सो हाँ फॉर बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप, सो दैट माइट आल्सो बी द रीजन व्हाई दे रिटेन पोलार्ड. एंड जैसे कि मैंने कहा ईशान किशन दे आर लुकिंग एट अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज अ फ्यूचर कैप्टन, तो प्रोबेबली उसके लिए दे यू नो दे वर एबल टू पुट इन एक्स्ट्रा मनी फॉर हिम. राइट। ये आप कुछ कह रहे थे, आई इंटरप्टेड यू दैट. हाँ हाँ, और एक इधर भी मेरे को एक कमेंट में एक अच्छा पॉइंट मिला, जो एक अर्णव ने कहा है कि मे बी ऑक्शंस, वेदर ऑक्शंस शुड बी अबंडेंट आफ्टर दिस, मतलब ये हम्म. मेरे को भी लग रहा है शायद होगा, क्योंकि इस बार हुआ क्योंकि टू न्यू टीम्स वर इंट्रोड्यूस, तो वी या हैड अ मेगा ऑप्शन, बट इसके बाद क्योंकि टीम्स आर रिलक्टेंट टू लेट देयर प्लेयर्स गो और दे वांट टू, या इट डजंट मेक सेंस. हाँ, तो इसके बाद शायद ऐसे जैसे फुटबॉल में ट्रांसफर्स होते हैं, आई थिंक उस टाइप के एक फॉर्मेट में चला जाएगा कि वन और टू प्लेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन अ ट्रांसफर विंडो, पर द कोर टीम विल रिमेन द सेम फॉर अ लॉन्ग या टाइम। तो एंड वैसे भी यू नो इवन प्लेयर्स को भी एक कनेक्ट होना चाहिए ना. इफ नाउ देयर आर प्लेयर्स हु हैव प्लेड फॉर 5-6 टीम्स नाउ. हाँ हाँ हाँ, मतलब एक फिर वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी नहीं रहता है कि यू नो दैट आई बिलोंग टू दिस टीम, आई हैव टू विन फॉर दिस टीम. Okay. हम्म, So I'm just going through the comments to see if there are any questions from your or my followers. I think बहुत सारे comments है. Why we are talking कभी ये miss किया. So let me just see. You can also just check and see. यस। कि
डी विलियर्स isn't replaceable. हाँ वही रत्ना and Rajveer's gaming save that's I mean that everyone knows that, but you have to move on हाँ finally, and RCB needs a fresh lease of life. uh, you know राइट. ओके यहाँ पे डी विलियर्स और ब्रेविस का कंपैरिजन भी शुरू हो गया ऑलरेडी. ओके ज्यादा तो मोस्टली पीपल आर टेलिंग मी दैट माय वॉइस इज ब्रेकिंग, फिर पीपल आर सेइंग कि नहीं अभी ठीक हुआ है करके. हसरंगा ओवर चाहल, ये हमने एक्चुअली डिस्कस किया था थोड़ा सा. हाँ तो क्या लगता है कि आरसीबी शुड दे हैव लाइक नॉट स्पेंट ऑन हसरंगा एंड वेंट फॉर चाहल, मतलब. नहीं बट सी इट्स लाइक मुझे तो वही लगा कि स्पेंडिंग 18 crores on these two players, okay, both are very good players, Hasranga and Hazelwood, although Hazelwood is not like how he used to bowl in his prime days, but still 18 crores. You see the auctions are going on for 2 days, right? राइट. There are so many players, and by the time uh, only the I think he was the I don't know 15th or the 16th player is announced. By the time only the 15th and 16th player is announced, RCB is down already down to 16 crores. हाँ हाँ So इधर मतलब एक तो उनको ऐसा हो सकता है कि उनका प्लान सेट है कि हमको यही प्लेयर्स चाहिए, हाँ these are the players, so बाकी बैटर नहीं करता है. And Chahal was never in the scheme of things, which would be a very sad thing actually, because Chahal has been an integral part of RCB team. In fact, मेरे कुछ RCB fans हैं, they even were saying they were very shocked that Chahal was not retained. रिटेन. हाँ हाँ Okay, obviously they can only retain a few players, 3 4 players, but yeah, they were shocked कि he was not retained considering uh, uh, the you know the things that he has done for RCB. But even then, there was a glimmer of hope कि नहीं RCB will go for Chahal anyways. हाँ. ऐसे and yeah, it was very surprising to see uh, that Chahal is not playing for RCB anymore. और पैट कमिंस रिटर्निंग टू केकेआर, ये भी कुछ कुछ लोगों ने मेंशन किया है. तो पर्सनली आई फील इट्स अ गुड डील, क्योंकि 7 करोड़ में मिला है. काफी एक्सपीरियंस बॉलर है. T20 Right. में उनका थोड़ा सा अभी भी फॉर्म उतना खास नहीं है, पर ये क्योंकि मतलब ट्रेडिशनली इज अ गुड बॉलर, तो ही आई थिंक ही विद टाइम ही कैन अडैप्ट, एंड स्टिल फेयरली यंग, और एक Yeah. लीडरशिप मटेरियल भी वो है. तो Yeah. ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन है, तो आई थिंक क्योंकि श्रेयस अय्यर के पहले आया था पैट कमिंस, तो आई थिंक एक वरी था कि मे बी इफ केकेआर डज नॉट गेट श्रेयस अय्यर, पैट कमिंस कुड हैव बीन अ पॉसिबल कैप्टेंसी चॉइस. तो उसको वो अच्छा साइनिंग है. उनका एक्चुअली बैटिंग भी काफी इंप्रूव किया है. तो नंबर 7 में पैट कमिंस एज अ बैट्समैन इज वेरी यूजफुल आई फील. Yeah. Actually, one more player I totally missed out on talking about today, which was like such me it was a real steal, was Jason Roy. हम्म Jason Roy was bought by Gujarat Titans for 2 crores, हम्म and मुझे I mean मुझे याद है परसों ही इसने माइकल वॉन ने ट्वीट किया था कि हाँ ही इज द बेस्ट प्लेयर इन T20 फॉर्मेट, ये वो सब ऐसे, एंड दिस वाज लाइक एन एंटी क्लाइमैक्स, एंड गुजरात got a steal here, and it was good for them actually, because see right now their combination, it does not look that promising. So they have Shubham Gill, they have Abhinav Manohar, and they have Jason Roy, and all-rounders में so far they have Hardik Pandya and Rahul Tewatia. हाँ हाँ और bowling में there's Rashid Khan, who was drafted already into the team. But yeah, Ferguson was a good deal, definitely at 10 crore. 10 And they crore have, is a little too much, but he's a good T20 bowler. yeah. So the bowling looks more or less sorted because they have Shami, they have Ferguson, and they have Rashid Khan. Yeah. हाँ And then Hardik Pandya bowling करेगा नहीं करेगा, ये तो हमेशा एक mystery रहा है. I don't know why it's a mystery. Fairly speaking, like मैं हमेशा देखता हूँ कि whenever Hardik Pandya played for India, is he going to bowl, and see, I mean ऐसा भी नहीं कि he has not bowled for a long time now. Okay. So when he is going to bowl, I don't think he will bowl with that favor. I mean that क्या बोलूंगा मैं उसको कि इतना इम्पैक्ट करेंगे जितना वो पहले करते थे. I don't know, उनको वो मोटिवेशन मुझे दिखता नहीं है बॉलिंग करने का, and he creates that unnecessary hype
कि तुम लोग देखो मैं स्टार प्लेयर हूँ, तुम लोग अभी देखो कि मैं बॉलिंग करे या नहीं करूंगा। बट रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था, समवन आस्क्ड हिम कि विल इज ही गोइंग टू बॉल व्हेन ही इज गोइंग टू कैप्टन द आईपीएल टीम। ही वाज लाइक यू वेट एंड वॉच, पता चलेगा क्या करना। अरे भाई तू कौन है, तू क्या मतलब बड़ा नंबर वन बॉलर है टीम इसका। ही इज अ गुड ऑलराउंडर, ही इज अ गुड Right. ऑलराउंडर, ही वाज अ गुड ऑलराउंडर, ही इज प्लेड वेल फॉर इंडिया एंड एज अ बैट्समैन ही इज फार मोर better to, हाँ, his contribution is far more better to the team than as a bowler. But why right. are you creating this hype कि मतलब कि मैं बॉलिंग करेगा अभी, मैं देखेगा मेरा आर्म अभी फील अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। जब करना है मतलब करना है, करेगा बॉलिंग। एंड एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं है, मीडिया उस पर कितना बात करता है। हमेशा हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो विल हार्दिक पांड्या बॉल टुडे, विल हार्दिक पांड्या बॉल टुडे। हाँ, हाँ। एक्चुअली उनका मतलब अगर वो दो स्किल सेट यूटिलाइज कर पाए तो एकदम मतलब प्राइसलेस एसेट है, और अगर नहीं कर पाए तो तब थोड़ा सा उसके पीछे मतलब कंट्रोवर्सी और मतलब मिस्ट्री तो रहता ही है। एंड हम्म, अभी बैक इंजरी के बाद आई डोंट नो मतलब कितना इफेक्टिव रहेंगे, ये तो एक मतलब सही या में क्वेश्चन है इसका। What are your views about the two new teams so far? Gujarat Titans ने दे उनका ओपनिंग तो so far sorted लगता है। They have Shubham Gill and Jason Roy, हम्म। and middle order they have Abhinav. I don't know Abhinav will कौन सी प्लेस पे बैट करेगा। They have Hardik Pandya and then there's Rahul Tewatia. But हाँ, yeah, I mean I don't know how middle order they has to be more strong. I guess हाँ, हाँ। definitely has to be more मिडिल strong. ऑर्डर, अभी तो कुछ भी नहीं है middle order में। There has to be one impactful player. हाँ, और एक्चुअली टॉप ऑफ द ऑर्डर में भी मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ, बिकॉज शुभमन गिल इज अ गुड ओडीआई प्लेयर आई थिंक, बट हाँ, T20 में उनका वही थोड़ा एक्सेलरेट करना प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम एंड रहता है, राइट। जेसन रॉय, वन ऑफ द रीजंस आई फील उनका थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी वो फिक्सचर्स की वजह से थोड़ा इधर उधर होता है, बिकॉज आई डोंट थिंक राइट, ईसीसी उतना मतलब ऐसा आईपीएल के अनुसार फिक्सचर्स नहीं रखते, वो अपना मैचेस रख लेते हैं। तो ऐसे हिस्टोरिकली भी हम लोग देखे हैं काफी इंग्लिश प्लेयर्स नहीं खेल पाए आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, तो मे बी उसके वजह से उनका थोड़ा प्राइस कम गया, पर इफ ही प्लेस तो काफी अच्छा एसेट है टॉप ऑफ द ऑर्डर में। बट शुभमन गिल को भी लेकिन थोड़ा सा तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा T20 बैटिंग। राइट, राइट, राइट। और लखनऊ के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हाँ, हाँ। ओके, लखनऊ का आई थिंक एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ उन लोगों का। या हाँ, श्योर, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट देम, या मतलब डिसेंट। हाँ। या एंड आई टॉक अबाउट पंजाब बिकॉज पंजाब के प्लेयर्स के बारे में भी हम लोग ने ज्यादा बात नहीं किया। ओके, हम्म। सो आई थिंक वी ओपनिंग उनका इट्स सॉर्टेड विद शिखर धवन एंड मयंक अग्रवाल, अग्रवाल, हाँ, हाँ। and they got Bairstow for 6.75 crore. राइट। I think Bairstow will be their preferred finisher. And again, Shah Rukh Khan was a good buy at 9 crore. But do you think overpriced or a good, fair deal? नहीं, नहीं, फेयर डील, बिकॉज़ Fair deal. काफ़ी Okay. काफ़ी अच्छा खेला डोमेस्टिक क्रिकेट में रिसेंटली। एंड Yeah. इंडियन हार्ड हिटर बैट्समैन एट नंबर 5-6 काफ़ी ज़्यादा नहीं है, एंड शाहरुख Hmm. खान इज़ वन ऑफ देम, एंड काफ़ी पोटेंशियल है, तो इन्वेस्ट करना माँगता है, मतलब ठीक है, मतलब होपफुल आई थिंक नेक्स्ट 3 इयर्स में ही विल रीच हिज प्राइम। और Yeah. आपका अगर एक्चुअली बेस्ट्रो एक्चुअली इज़ एन ओपनिंग ऑप्शन एज़ वेल, मतलब अगर मयंक हाँ, अग्रवाल हो नंबर सकता 3। है एग्जैक्टली। बेस्टो कैन बी अ गुड ओपनिंग ऑप्शन। तो मयंक अग्रवाल कैन प्लेइंग द मिडल ऑर्डर हुँ, with Arshdeep Singh. Arshdeep बट Singh has been a good all-rounder, and Shahrukh Khan as more of as a finisher. हाँ, हाँ। Uh, और and so yeah, हाँ, बोल रहा हूँ मैं, और ये बॉलिंग में राबाडा का साइनिंग भी काफ़ी अच्छा था, लाइक hmm, अगेन वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन T20 राइट नाउ, तो yeah. So they have Rabada and Rahul Chahar so far. वो चाहा। Rahul Chahar, And yeah, they got back Ishan Porel, who was, I think, part of their squad last year as well, but did not get to play yes, much. But इनका yeah, भी इन्होंने अंडर 19 खेला था, and थोड़ा पोटेंशियल है। आई थिंक ही इज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया, वो नेट बॉलर्स के ग्रुप में, तो पोटेंशियल है इनका भी, ईशान पोरेल का। एंड देन आई थिंक फेयरली बैलेंस टीम सो फार, मतलब yeah. एक Okay. एक कनंड्रम है इन लोगों का, कैप्टन कौन बनेगा, तो इज इट मयंक अग्रवाल और शिखर धवन, मतलब इट्स अ चॉइस बिटवीन द टू। Yeah, actually, it's a become very tricky thing now. हम्म। But I think they will go with Mayank Agarwal because did they announce it? नो, They नो, नो, announced it, right? They did not announce it. नो, नो, दे हैवंट अनाउंस्ड द कैप्टन येट। Yeah, but I think Agarwal has been part of it now for quite some time. So he might be the captain. Although राइट। Dhawan will be equally good in terms of experience, logic says Dhawan should be the captain. You know.
but I think they will go for Agarwal eventually. हाँ हाँ, और कल तो कोई कैप्टन सी मटेरियल कोई ऐसे ऑक्शन में आएगा, लाइक इज देयर एनीवन न्यू हु कुड बी टेकन इन? आई थिंक मॉर्गन रहेगा शायद, आई थिंक कल ऑक्शन। I don't. Okay, I think. I don't think. Do you think he will? उसको उनके लिए bidding करेगा? Because the only reason why he will be bidded for is his captaincy. कैप्टनसी हाँ, पर Yeah, उनका लास्ट सीजन का फॉर्म तो काफी बुरा था। काफी खराब था. So I don't think the things does not look promising for him. And Steve Smith also went unsold today. So वही वही। I think I don't know if second में शायद लेंगे नहीं लेंगे. Just for his experience. If someone takes him at a very base price, that might be possible. Right. But yeah, I was very surprised that Saha went unsold. I think he played at least 2 or 3 match-changing innings last IPL. So it was a surprise. But I think he'll be taken. He'll be taken by some team in the second round. राइट, आई थिंक ही विल कम, ही विल बी सोल्ड इन द नेक्स्ट राउंड। और काफी साहा का उनका टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हुए, यहाँ पे भी अनसोल्ड चले गए, थोड़ा रफ पैच चल रहा है, बट होपफुली नेक्स्ट राउंड में ही विल बी टेकन अप। एंड वो एक ओपनिंग बैट्समैन का भी एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो इज अ ओपनिंग बैट्समैन विकेट कीपर, तो दैट इज अ गुड स्किल टू हैव। इवन ये अपने स्पिनर्स काफी अनसोल्ड हुए आज. जाम्पा, एडम जाम्पा, आदिल रशीद, इमरान ताहिर तो ठीक है. I mean, he is at the fag end of his career. But yeah, Zampa, I did not expect Zampa will go unsold. At least मतलब बेस प्राइस पे तो कोई लेगा उनको, मैं सोचा था. वही जाम्पा का भी आई थिंक दे माइट कम अप बाद में, मतलब लेट्स सी. Yeah, right. So someone asked me what are my thoughts on MI team. So I think it looks quite promising, to be honest, because so far we have Rohit Sharma, we have Surya Kumar Yadav, we have Ishan Kishan, and we have the young promising South African under 90 player Brevis. So the top four looks very good, but I'll again say the same thing that that this obsession with Pollard has to stop at some point. Okay, like if he does not play well, he has to be dropped. I mean, otherwise, I mean that middle order is going to look very shaky, because for Mumbai Indians to deliver in tough situations where they are like 54-3, 64-3, Pollard has to deliver. And last season में उन्होंने काफी बार मतलब there were a lot of opportunities where he could have rescued the team from a very difficult phase, but he could not. He was not able to produce a good innings. So yeah, so I think otherwise it looks well, and so far in bowling mein we have been Bumrah was retained obviously, and we have Murugan Ashwin and Basil Thampi. So too early to comment, because I think tomorrow we'll get to know the whole picture of the bowling attack. Right now it's like in the phase of abhi bhi ban raha hai wo, so it's like work in progress, and I am assuming that Murugan Ashwin will not be our lead spinner. So I don't, unless they go for pace bowlers tomorrow. So let's wait and watch कि क्या होता है. And बहुत लोगों ने पूछा भी था आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो. Yeah, I mean from the start I've been supporting MI. So I mean been an MI fan from, you can say, the start of the IPL. And Debjit, like he has said couple of times during this stream, that he is KKR fan. So KKR fans, you can follow him right away. I mean बाकी franchise के भी follow कर सकते, obviously follow करो, लेकिन yeah, he's like he said, he's a KKR follower. And मुझे अभी भी याद है, when मेरी actually मेरी ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग कर्नाटक में हुई थी, एंड तभी जस्ट मतलब जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो रही थी, तभी वो टाइम पे आईपीएल ये हुआ था. नहीं, उसके पहले ही शुरू हुआ था. तो सब हम हॉस्टल में बैठ के ना मैचेस देखते थे. एंड दिस यूज्ड टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन जब एमआई और आरसीबी का मैच होता था. ओके, एंड जब भी कोई मैं मुंबई का प्लेयर, तभी सचिन तेंदुलकर वाज स्टिल प्लेइंग फॉर एमआई, व्हेन सचिन यूज्ड टू हिट अ बाउंड्री, और मुंबई का कोई भी प्लेयर अच्छा खेलते थे, आई यूज्ड टू क्लैप ऐसे, और मुझे बड़ा मजा आता था चिढ़ाने में इनको. एंड दीज प्लेयर्स वर लाइक, तू कैसा इधर आके इधर का खाना पीना करता है और तू उनके लिए सपोर्ट कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है. सो दिस पीपल यूज्ड टू रियली टॉन्ट मी ऐसे. बट या I'm just saying that from the start of the IPL I've been Mumbai Indians supporter. But ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आई एम वन ऑफ दो टॉक्सिक फैंस की
कुछ भी हो मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगा, बाकी टीम्स को गाली दूंगा, ऐसा नहीं है। जब कोई टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है देन ऑब्वियसली यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। Right. व्हाट इज अ व्यू फॉर गुजरात टाइटंस, कोई पूछा, आई थिंक वी जस्ट स्पोक अबाउट इट। And people are saying, some people said that ईशान किशन was not a good buy and all, and ठीक है, अपने अपने ये है views है। one of your supporters, one of your followers Arnav is asking, was Nitish Rana paid more? Yes, he was. He was. I think He was paid जब आठ yeah, आठ I think करोड़ we did not गया discuss about him, but yeah, I think he was paid more। क्योंकि क्योंकि काफी चांसेस मिले, वेरी इनकंसिस्टेंट, ही इज व्हेन ही प्लेज वेल वेरी गुड प्लेयर टू लुक एट, मतलब काफी स्टाइलिश प्लेयर है, उनके I शॉट्स भी think he played well when he was for Mumbai, if I remember। जब हाँ। वो मुंबई के प्लेयर थे, he has played a lot of good innings that time। एक्चुअली आई थिंक केकेआर के अगेंस्ट ही स्कोर्ड अ 90 और आई रिमेंबर हाँ जिसके हाँ बाद हाँ, बट ही हैज प्लेड वेल विद केकेआर एज वेल, बट काफी इनकंसिस्टेंट है, मतलब 80 स्कोर करेंगे नेक्स्ट मैच में डाक, फिर 80 फिर डाक, ऐसे ऐसे काफी उनका चलता रहता है, तो इनकंसिस्टेंट प्लेयर है थोड़े से अभी तक तो। या एंड यहाँ पे अनिरुद्ध ने पूछा है कि आर सीएसके टू इंडल्ज्ड इन गेटिंग देयर प्लेयर्स बैक। आई थिंक उसके बारे में वी टॉक्ड अबाउट इट कि समटाइम्स यू नो ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग मैनेजमेंट ये सब बाजू में हट के यू वांट टू गेट योर कोर टीम बैक, सिर्फ वही एक ये रहता है, एक एजेंडा रहता है हमारा। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एज फार एज यू हैव फेथ इन योर प्लेयर्स। Why Andy is asking why Sunrisers went for so many bowlers? But I think abhi bhi there's a lot of players left to be you know yeah, so bowlers mein let me just check, okay, they got Abdul Samad, Abhishek Sharma and Washington Sundar as all rounders, and then they have, okay, they have six bowlers, six genuine bowlers and three all rounders, okay, it's a very, I think it's a very genuine question asked here, so हाँ, but very, I think Bhuvaneshwar Kumar, I was surprised they went for him again. ha, yeah, They would probably. he's past his prime na, what do you think, he's past his prime? I think so because injuries मतलब ऐसे एक ऐसी चीज है ना, it takes a toll on you, एक एज के बाद वो थोड़ा सा difficult होता है to come back। He is a class act no doubt, but maybe अभी it's too late, little too late अभी। नटराजन आई थिंक ही उनको भी वापस लाए, पर लास्ट सीजन आई थिंक ही वाज अ लिटिल आउट ऑफ फेवर, मतलब उनको इंजरीज भी था शायद, और तो हाँ, मतलब कार्तिक त्यागी आई थिंक गुड, से वेरी गुड बाई फॉर अराउंड 4 करोड़, उन्होंने अंडर Yeah, 19 तो काफी अच्छा खेला था, सो yeah, right. So we'll just see one or two questions and we'll wrap it off for today. ऑलराइट। Okay. Deependra Singh is asking, which opener will you be predicting tomorrow for CSK? CSK, I think सीएसके का आप अगर देखोगे तो सीएसके का it's ओपनिंग, isn't Gaikwad तो है, हाँ and I don't think Uttappa will open. हाँ, उत्थप्पा Uttappa will definitely play in the middle order. Yeah, it's a good question. I think they are still to sort out their opening combination here. Ambati Raidu and Uttappa, I don't think both of them will play. I don't know. Both of them, या बट उनके chances कम है, unless और इनकी टीम तो अभी भी बन रही है। I mean बैटिंग वाइज बैटिंग CSK still has a work to do, lot of work to do। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि इनके जो ऑलराउंडर्स है ये लोग सारे एकदम लो मिडिल ऑर्डर हाँ हाँ ऑलराउंडर है। एग्जैक्टली। उथप्पा इज अ आप ओपनिंग ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने वो आपके पर्पल कैप भी जीता था, पर्पल कैप हाँ सॉरी ऑरेंज कैप जीता था जब ओपनिंग करके विद केकेआर, या तो वो तो है, पर आई थिंक दे लुक फॉर अ बेटर ऑल्टरनेटिव, मतलब ओपनिंग में। Yeah, I don't think Uttappa will be a long-term option because obviously he is not playing in that flair हाँ जब उनको पर्पल कैप मिला था। So it's going to be someone else, I feel, who is going to partner Ruturaj Gaikwad and okay, Ruturaj Gaikwad was okay. Ruturaj Gaikwad was retained. Oh, right. या Yes. Okay. Okay, guys. I think we'll wrap it up for today, unless there are any genuine questions. But I think someone asked about Punjab team, but we already discussed about it. Punjab and RCB. Okay. So I guess कल हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, एंड स्पेशली द मिस्ट्री सराउंडिंग द अनसोल्ड प्लेयर्स। हाँ I read this interesting मतलब मैंने मीम्स इस पे देखे शाकिब उल हसन पे, because no one went for him and there were a lot of
talk going around ki the thing because of his history, the way he behaves with umpires, so BCCI did that to protect their umpires. uh, So यार आई एम श्योर बांग्लादेशी फैंस जो लोग काफी एक्टिव रहते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स, वो लोग काफी भी अनॉयड होंगे क्योंकि शाकिब डिड नॉट गेट सोल्ड इनफैक्ट. yeah, because right now he's playing well there. He won some like 4 or 5 man of the match awards right now. And at that time this has to happen. But हाँ, it's again अभी हम बात करके speculations करके मतलब नहीं है, कल ही पता चलेगा because कोई भी ये कर सकते Yatharth is asking with was Smith going unsold a surprise? I think I was not at all surprised going by his recent string of forms. Steve Smith going unsold was not surprise for me, definitely. मेरे लिए भी नहीं. Okay. And worst and best. Okay, let's wrap it up with this. Okay, worst and best buys of the day. Okay, so I'll say first. Okay, for me, I won't call it the worst to buy, but yeah, overpriced buy of the day, I would say, is Hetmeyer for me. आज के दिन के लिए worst buy was Hetmeyer, clearly overpriced, way too overpriced. And काफी ये भी, I mean, budget से भी उनके पर्स से काफी पैसे खा गए. Okay. And best buys, there were lot of the best buys actually. ऐसा कोई मैं एक buy की अगर बात करूँ तो like I said, David Warner was a steal at 6 crores in that range. So for me that was one of the best buys. हाँ, मेरे लिए भी आई थिंक बेस्ट बाय डेविड वार्नर तो है ही. और श्रेयस अय्यर ऑल्दो ही वेंट वेरी एक्सपेंसिव बट आई थिंक इज अ वेरी सॉलिड लॉन्ग टर्म बाय. मतलब जैसे आपका गौतम गंभीर जैसे एक मतलब इन्वेस्टमेंट था एज अ कैप्टन एंड अ वेरी गुड ऑर्डर, वैसे आई थिंक इज अ वेरी गुड बाय. वर्स्ट बाय अगेन हिटमायर एंड निकोलस पूरन अगेन टू मच. So there's always this mystery around West Indian players, right? Whether they are playing even during auctions, एक अलग ही mystery रहता है. And even Tewatia for I think 9 crore, I think he went for around 9 crore. I think he went. Yeah, Tewatia was also overpriced. Oh, and but then again, like you said, these West Indian players are very unpredictable. Right. I still remember when I don't remember which IPL it was. जब कोई भी expect नहीं कर रहा था इनसे जो KKR के स्पिनर है यार, हाँ नरीन, अरे वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर यार, नाम क्यों दिमाग में नहीं आ रहा है. नहीं स्पिनर ऑलराउंडर, कोई बोलो यहाँ कमेंट में. सुनील नारायण ना. हाँ सुनील नारायण, सॉरी नाम दिमाग में नहीं आ रहा था यार. बट आई थिंक ही प्रोड्यूस सो मेनी मैच विनिंग स्पेल्स. दैट वाज लाइक नो वन एक्सपेक्टेड दैट कि इतना मतलब इतने इम्पैक्टफुल रहेंगे एज अ बॉलर तभी. हाँ, एंड फिर उन्होंने जैसे अपना बैटिंग का एक वो अचानक से एक नया डाला है. तो डेफिनेटली वो तो एक केकेआर लेजेंड माना जाएंगे, इतने सालों तक खेल रहे हैं. काफी अच्छा उनका फॉर्म इधर उधर डिप हुआ पर ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट. राणे वाज नॉट, उनका नाम नहीं आया ना राणे का. नहीं. Okay, I think it will be very interesting to see if any team goes for Imrani. And the most interesting auction tomorrow is definitely going to be Srishant for me at least. So, man, I mean, see, you have to hats off to him for his dedication and optimism. He think. But do you think any team or which team is going to go for him? He's 39, right? 39 running at this time. I think yes, 38, 39 something. Yes, definitely credit to him for his persistence, but it's very unlikely he will be taken up by any players, any team. Some Om Prashant asked कि is Hasranga overpriced? Yeah, as we talked about it. Yeah, मुझे तो लगा overpriced है. He's a very solid all-rounder option, but yeah, for the amount that RCB got him for, so it was definitely his overpriced. He better deliver for them. That's all I can say. Absolutely. And चलो then, anything you'd like to add, Debjit? नहीं, आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि कल भी हम लोग आफ्टर ऑक्शन जब थोड़ा अच्छा हमें आइडिया मिले तो और अच्छी तरह से वी कैन एनालाइज. तो होपफुली सारे ऑडियंस जो आए हैं कल भी दे विल कम बैक टू हैव द फाइनल फिनाले ऑक्शन फिनाले का. एंड
एक मेरा थोड़ा पेज का शाउट आउट कर देता हूँ, लाइक इफ यू गाइस फॉलो क्रिकेट एंड यू लाइक फॉलोइंग लाइक लेसर नोन स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, तो आप प्लीज फॉलो फॉरगॉटन क्रिकेट मेमोरीज ऑन Instagram. I write about stories which are about lives of cricketers which are not like too much thought of by the fans, so do check that out, check that page Yeah, out. please do follow him, guys, on Instagram. Like I said at the start of the introductions, at the start of the stream, कि cricket related जो जिन लोगों को मैं follow करता हूँ, there's a favorite, my favorite Instagram is Debjit. Okay, and that is why this was my first live stream. I wanted to make it, even if I make myself look like a fool, my guest should salvage the situation. So that is why I got Devjit, and forgotten cricket memories. His ID is there on the screen, you can see. And before we sign out, मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा, मतलब जो मैंने आपके पेज से ही मुझे पता चला दैट ये T20 का जो कंसेप्ट है दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड समवॉट बाय न्यूजीलैंड, राइट? दो Right. नॉट एग्जैक्टली. तो मैंने वो आपका ये पढ़ के फिर मैंने यूट्यूब पे ये वो वीडियोस ढूंढा. ओ माय गॉड, Sachin Tendulkar played it, and he actually played one good innings also in that. So Max New Zealand cricket. was the one which started it, and surprisingly didn't work at that time. Right. वो मैक्स क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें Max इंडिया cricket, प्लेड अ मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड उस फॉर्मेट में. It was yeah, and I think there was something like अगर 4 मारा तो 8 run in particular area. If you hit a boundary, you'll get 8 runs. राइट. Something वो like. फील्ड के अंदर ऐसे लाइक ट्रेपेजियम जैसे एक जोन था जहाँ पे वहां से अगर चौका हुआ तो चौका या छक्का हुआ तो योर स्कोर विल बी डबल. तो Yeah, okay. So it was an interesting concept, but I think whose time it was early. It was ahead of its time, probably. Okay. So yeah, so that's what it is. For more such interesting trivia's and some history bites about cricket that you might have no knowledge about, and I think you should follow Devjit and also follow his YouTube channel now. Now that he started YouTube channel. Okay. So thank you everyone for joining us today. Like I said, this was my first live stream, so I might have stuttered and stammered a bit because that was more out of nervousness. And thanks Devjit for coming and making this easy for me. I would have not able to done this on my own, and I needed someone to carry this live stream with me today. So yeah, thanks for giving your time. And yeah, so again we'll be having a live stream tomorrow. We'll have it at the same time, right? Because Right. it is proper for us to analyze everything that's happened over the day. So yeah, everyone coming once again, and yeah, we'll meet tomorrow at same time 10 p.m. It will be streaming on both of our channels. Okay, so Devjit's followers, you can stream it on my channel and on his channel also. You can. And, just to confirm, आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कमेंट करते हो यहाँ मेरे चैनल पर या देवजीत पे चैनल पर, we can see both the comment here. Okay? So I know when Devjit's follower is commenting, यहाँ पे मुझे दिखता है यहाँ. So thank you once again. I think that is the 9th time I'm saying thank you. So I guess we'll sign off for the day. Okay. Good night. Take care. Good night. Bye guys.